We are going to perform an experiment, and the aim of the experiment is to separate the mixture of phenylalanine and glycine using paper chromatography. The apparatus required for this experiment are Wortmann filter paper, capillary tube, fusion tubes, glycine, phenylalanine, and ninhydrine. Butanol, measuring cylinder, glacial acetic acid. Now in first test tube we will take glycine. In second fusion tube we will take 0.05 gram phenylalanine. In third test tube we will take mixture of glycine and phenylalanine. Now in first fusion tube we will take distilled water. Similarly in second fusion tube we will add distilled water. And same for the third fusion tube we will add distilled water. Now with help of capillary tube we will mix glycine and distilled water. Now we have to make a solution of 20 ml butanol, 5 ml glacial acetic acid and 25 ml distilled water. Mix it for 10 minutes. After that, we will get a glittering layer between them. After 10 minutes, we can see that the layer is formed between the solution. Now in a spray bottle we will take 0.2 gram ninhydrine and 10 ml butanol. And to this we will add 3 ml glacial acetic acid. We will mix both the three compounds. After that we close the spray bottle. We will make paper strip with the help of Wortmann filter paper. The length should be 8 cm and the width 3 cm. With the help of pencil, we will mark a line at 1.5 cm and then we will mark 3 points at equal distance. Similarly, we will repeat for the second paper strip. We will mark 3 equidistant points.
Now we are going to add the solvent into the beaker. With the help of capillary tube, now we will put the spots on this paper. Now we are going to put this strip into the beaker in which we have already taken the solvent. इसे इस तरीके से हम रखेंगे कि जो पेपर का सबसे नीचे वाला भाग है वो बीकर से टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ सॉल्वेंट से टच होना चाहिए, और जो मार्क्स हमने लगाए हैं पेपर के ऊपर वो सॉल्वेंट के अंदर नहीं डिजोल्व होने चाहिए, वो ऊपर ही रहने चाहिए. Now we have to left it for drying. After drying, we will put the ninhydrin solution on it to get the perfect spots. अब हम इसके ऊपर जो ninhydrin का सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया था वो डालेंगे ताकि हमारे जो स्पॉट्स हैं वो क्लियर हो जाए. The formula for retention factor is distance traveled by the component divided by distance traveled by the solvent. So हमने जो डिस्टेंस मेजर कर लिया इन सभी के कि सॉल्वेंट ने कितना ट्रेवल किया है 6 सेंटीमीटर, जो ग्लाइसिन हमने लिया था उसने 3.5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया है, जो फिनाइल एलेनिन था उसने 2.75 सेंटीमीटर, और जो हमने मिक्सचर लिया था ग्लाइसिन और फिनाइल एलेनिन का वो 4 सेंटीमीटर ट्रेवल हुआ है. तो जो आर एफ वैल्यू होती है वो अगर हम ग्लाइसिन के लिए देखें तो हम निकाल सकते हैं 3.5 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर. आर एफ वैल्यू फॉर फिनाइल एलेनिन इज इक्वल टू 2.75 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर, एंड आर एफ वैल्यू फॉर द मिक्सचर इज 4 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर. In this way, we found the RF value of all these three.